So today, that's not how you start a vlog. Hi, hello, thank you. So today I finally uploaded the second vlog and it's good. It gave me a sense of accomplishment or something. It's a fleeting moment, but still, it's a good feeling. So apart from that, now I have to go to college and then I have not started my thesis yet. I have not even written a single word, and today is 21st March, and I have to submit it on 23rd, just like in 2 days. So I have found out what the issue is. The issue is me myself. Whenever I hang out with my friends or anything, I do the extra things. I just get too involved, and I reach back home too late, and as you know, poor soul gets too tired, and then I sleep. Well, sleep is the best feeling. So what should I do? Well, I can't do much about it. So yeah, now I'll go to college and then we'll see what I do. Today I have a huge schedule to hang out with my friends, so I'll hang out with my friends. This whistles ra. क्या है? ना अरे कौन है? मेघा है? कौन? मेघा? मेघा इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं पता नहीं। वो मेघा का कोई एक्स है, एक्स से बात करती हो अभी भी, पता नहीं कुछ है। नहीं ये नहीं, मेघा मतलब कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पता नहीं। ए जॉनसन, तू मेघा के एक्स से बात कर रहा है? नहीं अच्छा, नहीं बात कर रहा। तू भागा क्यों लेकिन इनको देख के? मैं डर गया। इन लोग जो ऐसे ऐसे गुस्से में देख रहे थे ना, मैं बोला मेरे को नहीं मिला, मेरी गलती थोड़ी है वो। ये देख माचिस भी लेके आई है साला। कितने माचिस? इतने माचिस का क्या करेंगे हम लोग? ओए जॉनसन, बोल क्या बोल? क्या भागा क्यों तू? भाई इन लोग की तीखी नजर है यार। क्या तीखी नजर? भाई ऐसे ऐसे जो देख रहे थे ना, एक तो इसके चश्मे भी लाल है। कैसे? सुन कैसे देख रही थी तू, बता। उधर ही सीढ़ी उतर के मिली, सीढ़ी उतर के दिखी। हाँ। मैं बोला बाय बाय मैं जा रहा, तो वही भाग के आगे पीछे। मुझे लगा इसको मेरा आवाज सुनाई। एक ही डबल होता ना। तो क्या रेडी? काम है तुम लोगों का? बस कॉफी लेके वहाँ पे जाने का था, अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, उतना ही करना, ठीक है, अच्छे से करना। कप लेके, कौन सा कप दिखा? 4 लोग आ रहे एक साथ। कुल्लड़ लस्सी और वो भी बिल्ली पूरा लस्सी चाट के चला गया है। and this is such a bad cup. Why? जय प्रार्थना। This doesn't even feel like cool-hearted. I feel like even if you put it down, it's not going to. Hey, it will break, ठीक है? It will break. जॉनसन, पानी पी के आ साले, कैमरा मैन गांडू। इसको जलाने नहीं। तू रुकना, क्यों इतना घाई क्यों है? तू थोड़ा पीछे जा। अबे जॉनसन कैमरा वाला है, उसको आने तो दे। जॉनसन देख इतना, एक तो लेट आया साला। अरे बैग में रखूंगा। तो चेयरपर्सन को चेंज किया है। ये देख इसको, इसका मुंह देख। और तेरे को क्यों चेंज किया हमने, बता तो। मेरे से नहीं हो रहा, मैं हंस दिया भाई। क्या? अरे नरीन बता ही नहीं है। कौन है ये क्या है? तू हट साइड को एक से। ये अचानक ये क्यों? तो कहीं से बाहर निकलना है तो बात करने खुश हो गई। इतने देर तू, तेरा क्या चल रहा है? कौन है ये? कौन है मानसी? एंगेज रखना है ताकि वो बाहर निकल जाए। अच्छा, क्या करते रहे ये लोग? जॉनसन तू किया है कभी है? जॉनसन नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को जब क्लास से निकलना होगा तो मैं बोलता हूँ, ठीक है? कॉल करना तू मेरे को। तू किया कभी? नहीं? क्या है ये? सबको कॉल आ रहा है।
स्कोर को ये देख, चिरकुट को भी कॉल आया है। भाई इसके बाद और और सब लोग आ गए तो अभी जॉनसन नहीं आ रहा है। किसको मैसेज कर रहा है जॉनसन? किसको? कौन सी दोस्त? बहुत काम का है। कैसे था? चल अभी निकल। अबे रुक ए उसको मत छोड़ और थोड़ा काम है, उसको लेके आ। उसका रिएक्शन वो क्या बोला? नहीं देख नहीं बोल रहा नहीं रुक नहीं बोल रहा है पूछ लेके तू मत जा। ए, और काम है नारिन। हाँ भाई बिल्कुल है। कहाँ इसको मत जा, इसको मत जा। वो भी परमिशन दे रहा है। ए इसको रहने दे यहाँ पे। जा सिमरन जी ले साले लगे तेरा आज का हो गया, कंटेंट नहीं मिला। प्लास्टिक वाला वॉलंटियर का ना अगेन मैं वीडियो 1 तेरे को कंटेंट मिलेगा कि वीडियो 1 क्यों डिलीट किया। बोला तू, फिर से बोल। पता चला मेरे को कुछ पता नहीं। क्या बोला तू? कुछ नहीं, आज अच्छा दिन नहीं गया। कल फॉलो किया। क्या वीडियो 1 डिलीट करूँ मैं? कर सकते तो कर। जॉनसन बोलता है मेरा वो वीडियो पहला वाला व्लॉग डिलीट कर दे भाई। स्क्रिप्टेड है, पूरा स्क्रिप्टेड है। ठीक है ये सब जॉनसन पता है वो टैब चालू करके जॉनसन ने गाली दे दिया पता है। वो ने सब स्क्रिप्ट किया है, सब देख स्क्रिप्ट किया है। वो बेसिन में का बर्तन धो रहा था, मैं बोला जॉनसन सब धो देना। बोलता है नहीं मेरे दोस्त के है। मैं बोला तो कोई बात नहीं धो दे। बोलता है बहन के लौटे है दोस्त। सब स्क्रिप्ट है, मैंने नहीं बोला। नहीं बोला तू? मेरे पास उसका बाकी का भी है क्लिप, ठीक है? सोच उसमें तूने क्या क्या बोला था। आंखों तक ले आना, मैं वहां से पढ़ लूंगा। तुम बात आंखों तक ले आना, मैं वहां से पढ़ लूंगा। हर लफ्ज मोहब्बत बन जाएगा, मैं खामोशी में कह दूंगा। ना हो जुबान से इजहार जरूरी, तेरे चेहरे से सब कह दूंगा। जो तू मुस्कुरा दे पल भर को, मैं उस मुस्कान में जी लूंगा। तेरी सांस में महका करूँ, तेरे ख्वाब में बसा रहूँ। तेरी सांस में महका रहूँ, तेरी ख्वाब में बसा रहूँ। तुम बात आंखों तक ले आना, मैं जिंदगी भर पढ़ लूंगा। बाहर जाकर खाना खिलाना था, दोस्तों से मिलकर पुराने बातें याद करनी थी, अकेले बैठकर खुद के लिए समय निकालना। देना चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट हो जाए, दिल पे मत ले लेना, ठीक है? प्यार क्या है? मुझे नहीं गूगल, प्यार क्या है? मोहब्बत है। तो प्यार अभी 2 मिनट पहले कुछ लिखा है। शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। So yesterday was a crazy day and a fun day. So that means I did not do anything. So yeah, that's all. So today I actually decided to see how to write a thesis. And a while ago, a document was shared by the professors which had all the essentials or what to be included in a thesis. So I already had a small idea or the idea of how to write a thesis, but at the same time I don't know how to write a thesis. Let me explain. See, giving an outline of how to write a thesis is, we all know that there is a chapter 1 which has the introduction, the chapter 2 which has the theoretical framework and everything, chapter 3 which would will start with my topic and me explaining everything, every essential things on what I want to do in my thesis. And the 4th chapter is like the same thing, continuation, and the chapter 5 is the conclusion and then bibliography, in which I will give all the references. This is something I already know, but what to write in these things is the tough part, is something I don't know.
is something I have to gradually work and build up over a period of time. Yeah. So now that I have a very very little time, so I have to speed up the process, every single thing. So in the first chapter, which is the introduction, I'll tell you what all things are supposed to be added. So the first chapter of the thesis, according to this document, I will be telling. The first chapter of this thesis is the introduction. An introduction should be contain the following subheadings in order. First, general background, the argument, significance of the study, literature review, organization of the study, approach and methodologies, definition of terms. So, introduction or the general background. This section deals with biographical account, historical context, theoretical context, etc. Now, yeah. The argument. Here, the researcher expands on what was suggested as the argument. The argument. Here, the researcher expands on what was suggested as the statement of the problem and the purpose of the study. So, the problem statement and how the solution of the study or the solution of the problem statement would be explained here. Not the solution. Yeah, we don't provide solution. We just say why this study is necessary, or addressing the problem basically, and not solving them. No, we will solve them eventually. Significance of the problem. Moving on. This section deals with what makes the research worth doing it, and it should include major issues responsible for making the research new and plausible. For example, let's say if I am already doing something which was already done by something, so that means I shouldn't do it. No, that's not how it is. It is like what is I am adding to it, what I am bringing new to the table. That is supposed to be the significance of the problem, and this section will add. For example, later I will give example. Now, literature review. The major sources used could be introduced here if your supervisor decides that they should be introduced first. Major sources are the books, literature or criticism, or articles that the thesis is strongly dependent on. In some theses, it will be appropriate to concentrate the review of the literature and extend general discussion in an introductory and concluding chapters. In other words, the review and discussion should be distributed throughout the thesis. So yeah, this is the literature review, which actually, so my basically the primary and the secondary text on which the thesis is highly dependent on what I'm about to make the thesis. So usually it can be a book, it can be a document or an essay or whatever piece of text written by an author, by anyone, not just an author. So yeah, by an academician, by a teacher, by a professor, anything, any literature text, anything that is considered a literature, that will be included in this. Then organization of study, I have no idea what this is. Approach and methodologies, this I have an idea. So in this section I will be telling what kind of methodology I am using. So there are some methodologies which is given here, which is historical and biographical, formalistic, new criticism. That is, the formalistic is the new criticism. Psychological, formalistic is also one of my favorite methodologies. Psychological, psychoanalytical, mythological or archetypal, structuralist. Again, structuralist is one of my favorite methodologies, but I'm not using that. Post-structuralist, new historicist, deconstructive again one of my favorite thing. Feminist, sociological, reader-oriented narratologist. I think this is reader response theory, but yeah, based on your approach you need to introduce a reading strategy. Reading strategy is the explanation of steps you taken when reading your literary text. Basically close reading is done. Close reading is something you do it by yourself. I don't think there are many reading types. Maybe there is. The only thing I know is close reading. So that is what I will do. Definition of terms. If there are any jargons used in the research, they could come under this heading. These could include technical terms used in linguistics, psychological, film studies, sociology, philosophy, etc.
So yeah, this is how these all things are supposed to be included in the introduction. So my problem with this document or this thing is that it's very vague, it's not very precise on what I should be doing. This is something that is common for all the students, but this does not say what I have to do with my own topic of the thesis. So yeah, this without this it would be more difficult. With this it makes it less difficult for me to figure things out. So yeah, that's all. So too much amount of time is running out. So yeah, so in this video this is I'm ending it right here. Okay, so in the next video I will start writing the thesis, and by today end I might finish finish close reading or reading both of my primary text. Yeah, that's all. And then tomorrow I will start with the introduction of the thesis. Yeah, that will be me figuring out how to write the introduction. Yeah, and yeah, that's all. Bye.